अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज़ के हवाले से पढ़ा था, बेसिक शॉर्टकट कीज़ के हवाले से पढ़ा था। आज हम आउटलुक शॉर्टकट कीज़ के हवाले से पढ़ेंगे। कंट्रोल प्लस बी अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस ई कॉपी योर सिलेक्शन टू द क्लिपबोर्ड, control plus F forward message, control plus I apply italic formatting, control plus L create a contact list, control plus K insert hyperlink, control plus N create a new message or calendar event, control plus R reply to email message, control plus X cut oblique move selected text, control plus Y repeat the most recent action, control plus Z reverse the most recent action, control delete the select items, enter open the select items, shift plus E edit contact list, alt plus A open the action drop down menu, alt plus B open the address book with BCC field, alt plus C select message recipients for CC field, alt plus D switch to daily calendar view, alt plus E open the edit drop down menu, alt plus F open the file drop down menu, alt plus G open the go drop down menu, alt plus H open the help drop down menu, alt plus I open the file toolbar, alt plus J move to the subject field, alt plus K check name in CC or BCC field, alt plus L reply to all, alt plus M switch to monthly calendar view, alt plus N open the account drop down menu, alt plus O open the formatting drop down menu, alt plus P open the message option dialog box, alt plus R reply oblique switch to our weekly calendar view, alt plus S send, alt plus T open the tool drop down menu, alt plus V open the view drop down menu, alt plus W switch to weekly calendar view, alt plus Y switch to daily calendar view। उसके बाद हमारे पास है बेसिक नेविगेशन की, कंट्रोल प्लस 1 switch to mail, control plus 2 switch to calendar, control plus 3 switch to contacts, control plus 4 switch to tasks, control plus 5 switch to notes, control plus 6 switch to folder list in navigation pane, control plus 7 switch to shortcut, F6 toggle between panes, F3 oblique control plus E open the search box, ESC यानी escape clear the search result, F4 search for text or other items, tab cycle forward, F12 save as, F1
open Outlook help. F7 spelling check. Alt plus F4 close the active window.